Hello students, the question is the quantum nature of light explains the observations on photoelectric effect as option A, there is a minimum frequency of incident radiation below which no electrons are emitted. Option B, the maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of the incident radiation. Option C, when the metal surface is illuminated, electrons are ejected from the surface after some time. And option D, the photoelectric current is independent of intensity of incident radiation. So the problem is based on the topic photoelectric effect, and there are some statements and we have to find out the correct statement regarding the quantum nature of light which the photoelectric effect explains. So the first statement is there is a minimum frequency below which there is no ejection of electron. That is the correct statement. This is the correct statement because we know that there is a certain threshold frequency, and below the threshold frequency there is no ejection of electron, and when the frequency is exceeded by the threshold frequency, then there is an ejection of electron. So the threshold frequency is always there. So this option is correct. Now let us analyze other options also, why they are false, because the maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of incident radiation. So this is a wrong statement because we know that the kinetic energy is equal to h nu minus phi. So the kinetic energy not only depends upon this frequency, it also depends upon the work function of the metal. So work function is also responsible for the kinetic energy. It is also related to the kinetic energy. The kinetic energy not only depend on the frequency, it also depends on the work function. So this statement is also false, that it depends only on the frequency. No, it depends on frequency as well as the work function. So this is the wrong statement. When the metal surface is illuminated, electrons are ejected from the surface after some time. So this is also a wrong statement because there is an instantaneous ejection of electrons which takes a very less amount of time, like 10 to the power minus 8 or 10 to the power minus 9 seconds, which is almost negligible. So after some time, this is the wrong statement. They eject instantaneously. Then the photoelectric current is independent of the intensity of incident radiation. This is also a wrong statement because we know that the higher the intensity, the larger the number of photoelectrons and hence the photoelectric current. So यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है वो एक्सप्लेन करता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारी सही है। तो हम देखते हैं पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें कहा गया है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिससे नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होता है, एमिट नहीं होता है। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये स्टेटमेंट बताया जाता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा होती है किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटोइलेक्ट्रॉन की, वो केवल डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। को एक पर्टिकुलर मेटल है, उस पर कोई रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जा रहा है, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो केवल जो है न्यू पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हम देखते हैं जो इक्वेशन है फोटो इफेक्ट की, जो इक्वेशन हम लिखते हैं तो एच न्यू माइनस फाई, तो ये फाई यानी कि वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, मेटल के वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम निकलती है। सो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर जब मेटल सर्फेसेस को इल्यूमिनेट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर आने में कुछ समय लगता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि वो इंस्टेंटेनियसली जो है इजेक्ट कर जाते हैं किसी भी सरफेस से। वो इतना मिनिमम टाइम होता है जिसको कि हम मेज़र नहीं कर सकते, इमेजरेबल टाइम है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो सम टाइम जो वर्ड है वो गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिटी पे जो है वो उससे इंडिपेंडेंट होती है। तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, यानी जितनी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी उतनी ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा इजेक्ट होते हैं, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा इजेक्ट होंगे उतनी ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।